that we have the yoga. And this has been sung for years together and in this country, in the villages. It's a very fast number. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. अनादि निर्गुणी निर्गुणी प्रगटली भवानी. अनादि निर्गुणी
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட தியானத்துக்கு உட்கார்வோம். இரண்டு கைகளையும் கூப்பி ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட அனுமதியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. இன்றைக்கு நவராத்திரியோட 7வது நாள். தங்களுடைய காலராத்திரி ரூபத்தில் நாங்கள் தியானம் செய்ய அனுமதியை தந்தருளுங்கள் தாயே. இந்த தியானத்தை தாங்கள் தான் வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. இந்த பிரார்த்தனையோடு நம்மளுடைய குண்டலினை உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட திவ்ய ரூபத்தை பார்த்துட்டே மெதுவாக நம்மளுடைய கண்கள் மூடி நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து பார்ப்போம். சைத்தன்ய நிலையில் கவனிப்போம். கவனத்தை ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. தாங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனத்தை எப்பொழுதும் எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து கொஞ்சம் மேல கவனத்தை வைத்து பார்ப்போம். 2 உள்ளங்கையையும் கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் இந்த மனம், புத்தி, சரீரம், அகங்காரம் ஏதுமில்லை தாயே. தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம்
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடாநாடி. மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ இடாநாடி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுடைய இடாநாடியை பாதிக்கிற தமோ குணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்தி ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். முழு கவனம் பிங்களா நாடி. மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிங்கள நாடி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களோட பிங்கள நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்கள் தாயே. ரஜோகுணத்தோட தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களோட பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே.
श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கையும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்முடைய சுஷும்னா நாடி ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுஷும்னா நாடி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. சத்வ குணத்தோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. தியானத்துக்கு தேவையான முழு சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனத்தை நிகழ்காலத்தில் நிலைநிறுத்தி வைங்கள் தாயே. श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்முடைய சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலே வைத்து ஸ்ரீ கணேச தரசீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दूत्तररूपं नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निःश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाधौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ஸ்ரீ கணேஷோட ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ காலராத்திரி நவதுர்காவோட 7வது ரூபம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி பயங்கர ரூபத்தில் எல்லா அஸ்திர சஸ்திரங்களோட பக்தர்களுக்கு அபயம் தருபவளும் தாங்களே தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய கோர ரூபத்தை பார்த்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான தீய குணங்களும் அசுர சக்திகளையும் வெளியேற்றி விடுங்கள் தாயே. தங்களுடைய சௌமிய ரூபத்தால் எங்களுக்கு எல்லா மங்களமும் அபயமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள இருளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சர்வ ரக்ஷாகரி காலராத்திரியாக எங்களை ரட்சிக்க வேண்டும் தாயே. எங்களுடைய முன்னேற்ற பாதையில் இருக்கிற எல்லா விதமான தடைகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி
தாங்களே சாக்ஷாத் சண்ட முண்டத்தை அளித்தவள். ரத்த பீஜோட ரத்தத்தை தாங்கள் தான் குடிச்சவள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா தீய சக்திகளையும் தாங்கள் தான் அழித்து விட வேண்டும் தாயே. நேர்மையும் தர்மமும் எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. எல்லா தெய்வீக குணங்களையும் தந்து எங்களுக்கு ஆசீர்வதியுங்கள் தாயே. மங்கள ரூபிணியாக எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ காலராத்திரி சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कालरात्रि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. देवी अथर्व शीर्षத்தை கூறுவோம். ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्तु कासित्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मतः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अशून्यं च अहमानन्दा अनानन्दौ अहं विज्ञान अविज्ञाने अहं ब्रह्मा अब्रह्म निवेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहमवेदोऽहं विद्याहमविद्याहम् अजाहमनजाहम् अधश्चोध्वं च तिर्यक्चाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिर्चरामि अहमादित्यै मरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहम् अश्विनावुभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं ददामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनिवसुनां चिकितुषी प्रथमायज्ञियानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरस्वन्तसमुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरानाशयित्रयते नमः देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीं अदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्हय्य जनिष्ठ दक्षया दुहिता तव तां देवान्वजायन्त भद्रामृतबन्धवः कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहाः सा मातरिश्वा भ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला माययाश्च पुरुष्यैषा विश्वमाता दिविध्योम् एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्भानधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टो वसवः
सैषैकादश रुद्रः सैषा द्वादशादित्यः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सैषा प्रजापति इंद्र मनवः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषीं कला काष्ठादिकाल रूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वियदीकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितम् अर्धेन्दुतुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाध्वरयुक्ततः बिच्चेन वार्णकोर्णस्यान्महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशां कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुदां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेया अनन्ता अलक्ष्या जैका नैकेति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविधातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चथर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चा स्थापयति शतलक्षं प्रजत्वापि सोचा सिद्धिं न विन्दति शत अष्टोत्तरं चास्य पुनश्चर्या विधि स्मृतः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यत् पापै प्रमुच्यते महादुर्गानि तरति महादेव्या प्रसादतः सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति निशीते तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यान् महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषद् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः கவனத்தை சஹஸ்ராரத்திலே வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கிப்போம். நிர்விச்சார நிலையில் இருப்போம்.
இதே நிலையில் ஸ்ரீமத் பரிவ சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். Motherhood is much more important than the guruhood, because guru is the one who trains you, makes you efficient, but the mother forgives you. She loves you, she sustains you, and she teaches you how to love. She has tremendous patience and tremendous love, and she does it single-handed. She doesn't expect anything from you. Absolutely selfless. Selfless is a very small word, I should say. It's such an expansive compassion which engulfs everything that is wrong, dissolves it, digests it, absorbs it. So it's a very great day of Navratri is for all the surgeries. Because then she took her form as Sita, as the power of Sri Rama. Silent, potential, suffering. How much she suffered? How much she suffered? Then she took the form of Radha. Then she came as 5 powers of Saraswati, as the 5 wives of Sri Krishna. Then she came as Mary. That was the greatest suffering, I think, to see the Son being crucified. The suffering, silent, patient suffering, she had to go through it. All that drama to be seen was too much. She went through all that because you all had to cross your Agachana. She had to sacrifice her child. It's easy for a father to do that, very difficult for a mother. Now you are all mothers, so many of you will know what it is to have a child and how one feels about it. After doing that, she comes to the state where you have to give your realization. It's a work of tremendous patience, as you know. It's tremendous patience and understanding. Human beings, as the time advanced, have evolved put out for realization, but also evolved into very funny, stupid, crooked, nonsensical ways. It's impossible to understand how they go about with their stupid ideas and how troublesome they can. They can be very crooked, funny, troublesome, to such an extent that sometimes even it is difficult to forgive. Despite that, so many of you are here today in Europe, in the land of the Guru. Here I find who have got realization. So the mother's pride, mother's joy, knows no bounds, no doubt about it. It's such a great thing to see her children sitting here to receive all the powers from her. Now again, when we are in this situation, we have to know the first principle with which the whole thing started. That it is the power of love. It is the power of love that has brought you to this state. And it's the power of love
that you will expression manifest, you will be born. Now, after coming to Sahaj Yoga, also the temptations become subtler and subtler. We try to do Sahaj Yoga. We try to spread Sahaj Yoga sometimes for the powers. Maybe you are lonely, so you want to have more surgeries. Maybe you do it because you think that that's how you spread your powers. Even there are problems on leadership, I find ego problems there are. Somebody is appointed a leader, then another feels bad, this, that all goes on. I see the drama going on. Like small children, they fight. What is this leadership? It's just artificial. It's not even noted in any newspaper. As they have mock governments, we have a mock leadership. So then people fight for that. It becomes subtle. The power struggle goes on, becoming subtler and subtler. Then again, money problems come up. Some people think that Sahaj Yoga is a very good way of making money. Or some people think that we can get a lot of money because Mother blesses people with money, affluence, so let us be in Sahaj Yoga. But don't spend a single pie, you see. Just manage it. No, it's not like that. It's the other way around. It's again another dilemma, is that in India, which is a place of poverty compared to all of you, everyone donates money. All the trustees in every center, wherever there are trustees, have to donate at least 5,000 rupees to become the trustees. Of course, I don't get anything out of it, but I must have donated, I don't know how much myself to become the trustee of such a relief. But you have to donate. And when you become miserly again, that means again, it's the same game going on. You have bank balances, but the source is finished and you have nothing left. The bank balance should be with God. Then He gives you interest more than the capital. Is there any bank which does that? That is not the Swiss bank. You have to pay for putting money with that. That's how it is. You should always try to go to the source. This becomes subtler and subtler in the sense that people think that now their children are realized souls. All right, so what? They're not gods, are they? They get so involved with their children. I mean, this is another stupidity women fall into. But to them, their child is so important. They get so adhered to the child. I mean, first they used to neglect their children. Now they become so attached to their children that they look like glued people all the time. And such children cannot grow properly unless and until you give them freedom. Give them full freedom to grow. But guidance, of course, that they are majestic people, being surgeries, they are born realized. As a surgery, as a good surgery, how they should be. Have a report, talk to them, tell them about it, how they should be. Develop that self-respect within them, that they should be like this, not to glue them to you. That's not the way. Children will never grow properly, even physically, if you glue them to yourself. In the West now, I see new ideas coming up that the children must be glued to the mother. This is from one extreme to another extreme. They become very left-sided. Even if they will be grown up in age, they won't grow up in their brains. They won't grow up in their behavior.
you would have glued with the mother. If they cry for a little bit doesn't matter, but the children must be made to sleep away from mother. All the time, you should not carry your children in your lap. There is no need at all. But this is not that the child wants, it's the mother who wants this kind of thing. And some fathers also have seen, glue down to their children. And then they say, mother, my child is spoiled, she's like this, like that. Such children will get possessed very fast if you make the children dependent on it. Very fast they will become possessed. If you make them over independent, you are on your own. Like the other side was that when we were in Oxford, a girl of 7 years used to come and give us newspapers. And she was a daughter of a lord. At about 5 o'clock in the morning in that cold, she used to climb up all the way on a bicycle, delivering those newspapers. And when I told her, mother, what are you doing? It's very dangerous. This child is in danger. She's a girl. How can you do that to her? She said, no, she has to be on her own. So the one side is to be on her own, and another side is to glue them. It's again the same subtle attitude of possessiveness. It's possessiveness. This is my child. I must look after the child. The child is a realized soul. This, that. Only your child is not realized soul. Everybody's child is a realized soul in search of. How much do you do for others' children? Or only you look after your own child? The custom should be, if you buy one thing for your child, buy 2 more things for another child. Buy better things for another child and less things for your child. Let your child share his things with others. At the time when you are buying something, buy something that he can share. Teach him how to share. Because though they are realized souls, with the mothers and the fathers like this, they'll become again the same miserly old style people. Quarrelsome, fighting, beating each other, troubling each other. So be careful. Being realized soul, you'll be surprised, they will be extremely, extremely convenient for you. Give them to other surgeries to handle. Depend on them, let them look after. And the homogeneous feeling comes through children. Children are the ones who bind each other. But don't touch my child. This is my child. You close the door as soon as somebody comes in. That's you are going back in the same way as your mothers have been. There's no war on in surgery. We are in the domain of God. This realization has to come. There is no need to seek all these useless things, these pleasures of life. Understand your responsibility. That you are surgeries first and last and in the middle. And as surgeries, what is your duty? Is to be completely dedicated for the betterment and the benevolence of others. That's the only thing which is going to nourish you to rise. If you look after your children like this, like mad, it's not going to help you. You'll have problems. If you neglect your children, you will have problems. So come in the center and be just witnesses of all that. It's a very common feeling in the beginning of every surgery who comes to surgery. They'll send me the list of 5 generations on this side and 5 generations on this side. My father's, brothers, sisters, this thing is, that thing is, real cousins, real, this thing is sick. So please, mother, put your attention. And when I put my attention, the attention returns back, I can't find that.
It starts like that to begin. All right. In the beginning, I say, all right, just now they have entered. But you don't know these are tentacles which should keep you down. They do not allow you to rise in the domain of God. In the domain of God, everything that is yours, even your hair, are looked after by God Almighty. Everything. Can you understand that? Can you realize that? Is all done by billions and billions and billions of powers of Adishakti. What can you do yourself? Nothing, except for worrying and troubling. So just if you believe and assume that power today, that you are in the domain of God, which is active benevolence. The nature of it is active benevolence. As they say, Hita. If you are sick, it is for your benevolence. If you are all right, it is for your benevolence. If you have money, it is for your benevolence. If you don't have money, it is for your benevolence. Everything does good for you in the domain of God. Do not judge it according to your own standards. Whom do you think to be a person who is benevolent in this world? Apart from me. Really, in the real sense of the word. Supposing you take a man who is very rich. Is he benevolent? No. Is he happy? No. Is he respected? No. At least he has to be a realized soul to be somewhere near that description. And if you have to ascend in the domain of God, you have to know that everything works through His power. Your activity, your inactivity, your sleep, everything is worked through His powers of love. Love can never harm, can never destroy. You go a little ahead of it, and it showers flowers of God. But understand your nature. Supposing you are a left-sided person. Mostly I've seen left-sided persons always want to do my pujas. And the right-sided persons are organizing. Do the other way around. Must know your nature. Give yourself a balance and then enter into the kingdom of God. Like you are entering into a door, say for example, and you have too much load on your back, meaning you are a left-sided person. Then take down the load from your back on your head and enter. But if you have too much on your head, put it on your back and enter. Because you're tired, you do it every day. Supposing this hand is tired, you put it on the left hand. I see in the aeroplane when people are walking, they are holding it with one hand, and automatically when it is tired, you put it to the left. Automatically, they are not Sujukis. In the same way, in life also, if you have done one-sidedness too much, try to do the other side and give yourself a balance. Navratri is the day to give you the balance. Those whose right hand is tired will get the power in the left hand. Those who have the left hand tired will get the power of the right hand to share the load. So those who are having money problems will solve their money problems. And those who have
Sleeping problems, you solve the sleeping problem. But one can say, if somebody has both, then what do they do? I know of somebody, I live there in that country, where they have both the power. They sleep as well as they have no money and they're not bothered. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஆரத்திக்கு ரெடி ஆயிடுவோம். सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ, कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में
में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संकटनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री
शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. தங்களுடைய காலராத்திரி ரூபத்தை எங்களுக்கு தியானம் செய்ய அனுமதியை தந்திருந்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தாங்களுடைய ஒரு உத்தமமாக கருவியாக எப்பொழுதும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால்
தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. குண்டலினி வர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.